मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा। आपने तो हमें मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट। उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज नॉट। हम तो फिर आप चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे सामने। वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त, जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली मट वाच already flown under the bridges. I would not say so because जितनी जजमेंट उसके बाद आई, उसके बाद तो माशाल्लाह को हमने मुशर्रफ के माशाल्लाह को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958 में. This book predates martial law. It was I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct. Nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब के अल्फाज नहीं है. ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन. दिस इज चांसलर केंट आई थिंक. जी अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही से हमने as a matter of fact calling regarding it, government capital G means the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia. उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौधरी साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेयर as we know the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये सारे लॉ जो है, ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी, पैरा 28 जो है, power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional
provisions, the judges are giving effect to the सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस वक्त हुआ है ब्रेक का। अब लगेगा सबको शॉक, क्योंकि अब चलेंगे एड्स फ्री मैचेस शॉक पर। डाउनलोड द ऐप नाउ और एंजॉय करो क्रिकेट का हंगामा शॉक से। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू कुक। हम माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। हुआ कुछ यूं 25 साल पहले। बनी एक ऐसी जगह, शुरू हुआ ये सिलसिला। कौन हो कहाँ से हो, पूछना कोई है खुशियों की। बना ऐसा जहां बराबर सब यहाँ। आराम से। इतनी क्यूट पिक्चर्स का बिहाइंड द सीन ये है। बच्चा रो सकता है पर माँ नहीं। बच्चा जब चाहे सो सकता है पर माँ के लिए आराम नहीं। बच्चा जिद करके घर सर पर उठा ले पर माँ आवाज तक नहीं। जो माँ नहीं कहती वो भी हम सुनते हैं और उसकी ममता के सफर को आसान करते हैं। यही शील्ड करता आ रहा है गुज़िश्ता 48 सालों से। शील्ड, ममता की जुबान। पूरे पाकिस्तान ने माना सालन और तेल के जिद्दी दाग हुए एरियल से साफ। एक दाग बाकी है, कड़क चाय का कड़क दाग। तो हो जाए मुकाबला। नया और पहले से बेहतर एरियल, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। शप 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 मारे जर्म्स। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शप शप शप। सेफगार्ड से जो नहाए घंटों जर्म से बचता जाए। शप 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। मंथली इजी कार्ड 800 से पाओ 20 GB डेटा, 4000 टेलीनॉम मिनट्स और 350 अदर नेटवर्क मिनट्स।
of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are two different questions. One is of competence, second is of conflict. तो आप इनको अलग-अलग बताइए कि जी competence क्यों नहीं है, और अगर competence नहीं है तो that ends the matter. You cannot do it. पहली बात तो But if there is competence, then we look at the other aspect. कि आपने कानून पास कर दिया, but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की आर्टिकल 239 मैं एक चीज, अगर इफ दिस केस गेट्स आउट ऑफ हैंड टोटली, तो जितना वक्त आप लेंगे दूसरे पिटिशनर्स का वक्त मैं फिर उसको कर्टेल करूंगा। जी देखिए कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा, सोच लीजिए। अब ये नहीं कि आप बहुत ही बारीकियों में चले जाएं, और हम आपको बिल्कुल वक्त देंगे, मगर फिर आप तैयार रहिए रात तक बैठने के लिए आज के दिन। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मालूम होता है कि आप दूसरे हजरात को भी वक्त देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे हैव द राइट सर। मैं गुजारिश करना चाहूँगा ये जो ओथ है, इसको मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसको मैं एक हसार करार देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब आप ओथ लेते हैं